तो नमस्कार, आप सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। और इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीम्स का वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और फिलहाल एक अर्ली ब्रेक थ्रू मिला था मिचेल मार्श नाम का, लेकिन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दोनों ही भैया मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। और अमर, आपका क्या ख्याल है आज के मुकाबले में, किस तरह से अभी तक की जो 10 ओवर गए हैं आप उसको कैसे देख रहे हो? If we talk about for like 10 overs, Australia have commanded the position. They have been in command, and after losing first wicket of Mitchell Marsh, Australia were under little bit pressure, but David Warner and Steve Smith, they led Australia to a greater scoring. That is around 71 for 1. So Australia are in command, and India are searching for wickets as of now, but Australia are dealing in boundaries and rotating strikes. That's what is keeping them confident. ओके, सो राइट नाउ अगर हम देखें तो डेविड वार्नर जो है वो 46 बॉल्स में 41 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और एक बार फिर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दोनों ही खिलाड़ी आ चुके हैं और अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं। रोहित शर्मा brought in spinners Kuldeep Yadav and Ashwin just to get breakthrough, but that hasn't happened so far, and Rohit Sharma is little bit nervous and he's trying to get wickets, searching for wickets, because things are not looking good for India as of now if we see the situation, because Steve Smith and David Warner have staged a fabulous partnership that is giving scary times to Team India. So we will have to see what India's strategy remains going forward in the match, because as of now Australia are leading the proceedings. Right now अगर हम देखें तो like 16th ओवर चल रहा है और इट्स बीन लाइक 73 रन्स फॉर वन विकेट। Even Steve Smith is looking good. Like he is batting confidently. I have noticed here that they are not in hurry. No sort of hurry, just keeping calm and rotating the strike. And this is the game of cricket that keeps you on the top. This is what these Aussies are doing. दोनों ही क्रिकेटर्स ने अभी तक दोनों को यही बल्ले और एक अच्छी क्लोज कॉल दी है अश्विन की तरफ से। There have been 2-3 like that. Yes, of course. Now David Warner and Steve Smith दोनों को अगर कोई ब्रेक थ्रू इंडिया को दिला सकता है, अगर दोनों को वापस अश्विन एंड कुलदीप, even I think so. Both are reliable sources and reliable players for Team India, and they can give some breakthrough to Team India. But after seeing the proceedings for last 1 hour, I have noticed that Ashwin and Kuldeep Yadav, they have been consistent in their bowling attack, and on numerous occasions, like 4-5 occasions, Steve Smith and David Warner, they have managed to survive against these two master spinners. Right. So that's the thing, and India are trying their best to get some breakthrough, because if Australia cross past 100, India will be under tremendous pressure. So अच्छा, एक मिनट मैं जरा माफी चाहूंगा, यहाँ पर विनोद जी कमेंट्स में बता रहे हैं कि भाई इंडिया को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, इन्होंने 108 मेडल अपने नाम कर लिए हैं टीम इंडिया ने, और पिछला मेडल तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया का ही था, और दे वॉन द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड अच्छी एक it's a great milestone for Team India. Of course. Team India were led by Ruturaj Gaikwad, and they successfully won the gold medal. So it's a great one for Team India. Congratulations to Team India as well, and congratulations to the skipper Ruturaj Gaikwad. भाई अगर अमर आज के मुकाबले पे अगर हम नजर डालें तो, और दोस्तों आप भी बताइएगा कि आज शुभमन गिल, तो जैसा कि कहा जा रहा था उन्हें डेंगू हो गया है, as per reports he was down with dengue, and in the लगातार चल रहा था उनका, मतलब सारी चीजें उनके ऊपर मॉनिटर करी जा रही थी ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली आवरली बेसिस बेसिकली। तो लेकिन अभी अगर आप टीम इंडिया को देखते हो, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अभी काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, और ऐसे में क्या शुभमन गिल का ना होना कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए, do you think it's a problematic? It's a bit problematic for Team India, because seeing the previous record of Gill has been in the rhythm, and he has played tremendous cricket, and he has also given scary times to Australia. And we have got one wicket. कुलदीप यादव का विकेट मिल चुका है दोस्तों, और पहला ब्रेक थ्रू जो हमें लग रहा था कि
स्मिथ, Yes. कुलदीप या फिर रविचंद्रन अश्विन दिलवाएंगे. And डेविड David वार्नर इज Warner, आउट. he was struggling against Kuldeep. डेविड वार्नर काफी देर से स्ट्रगल कर रहे थे Yes. और 52 गेंदों में 41 रन He बनाकर was अब struggling. वापस पवेलियन जा रहे हैं. So Team India are back in game now. They are back in the game because Warner was the dominant force for Exactly. Australia and he was leading their attack. So काफी तेजी से रन बना रहे थे he वार्नर. was और यहाँ पर वो 41 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट चुके and हैं. he also कुलदीप यादव- accelerated his attack कुलदीप यादव की गेंद पर उन्होंने कुलदीप को ही कैच दे बैठे. and he repaired the faith. Kuldeep Yadav. कुलदीप यादव पे आपने भरोसा Yes, जताया his था keeper और Rohit Sharma posed the faith in Kuldeep Yadav and he वैसे brought- मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. अश्विन का ये होम ग्राउंड है. No one knows this ground better than Ashwin because it is his home ground, and that is why Rohit Sharma is going over and again to Ashwin with the ball because he knows he will also return with 2-3 wickets. एग्जैक्टली. सुमीर भाटिया कह रहे हैं मेरी बॉल मेरा कैच. एग्जैक्टली. Sumit, भाई वो मिस जो वार्नर की जो कमजोरी आ रही थी ना वो आई गेस कुलदीप यादव ने पकड़ ली थी क्योंकि काफी देर से वो स्ट्रगल करते नजर आ That's रहे what I noticed. थे. He tried to accelerate. Absolutely, and he was coming down the pitch just to defend the ball, but it did not happen this time. And Kuldeep Yadav is struck. यहाँ पे टीम इंडिया का विकेट बेहद जरूरी था क्योंकि It was ये necessary. पार्टनरशिप तोड़नी बहुत जरूरी थी It was necessary. क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर डटते नजर आ रहे थे एंड व्हिच वाज लाइक काइंड ऑफ अ बैड It थिंग was फॉर टीम इंडिया. necessary, and India will be little bit happy. Not entirely happy. They will be a bit happy. सॉर्ट ऑफ because रिलीफ मिला होगा एक there अच्छा. is just a shy of relief for Team India because there is also other players to come. Labuschagne is there, Cameron Green is there. They are in the line to come, so it will be little bit. India will have to maintain their consistency with the ball. So that's what has to happen for India to get on top of this game. शानू कुमार is saying Australia will win the match. शानू, can you tell us, आप बता सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन कौन बना सकता है? अगर आप मतलब अगर आपको लग रहा है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में गेम आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, तो कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा जो ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और फिलहाल के लिए कुलदीप यादव अपना स्पेल. So Labuschagne has arrived at the crease. लाबुशेन ने एक अच्छा डिफेंस किया है. अब यहाँ से एक बार अच्छा यहाँ एक प्रॉब्लम और जो मुझे लगता है अमर होती है, मतलब टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो विकेट गिरता है तो कुछ गेंदें शेष जाती हैं और फिर उसके बाद बल्लेबाज जब सेट होने लगता है तब उसके बाद रन स्कोर करता है. बट ये चीज यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है. ऑस्ट्रेलिया का जो अभी तक गेम हुआ है वो काइंड ऑफ इंग्लैंड से कहीं ना कहीं मिलता जुलता आ रहा है कि भाई कोई भी बल्लेबाज आउट होगा, प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हम मारते रहेंगे. Actually, this should be the strategy with each and every team because if you come under a bit pressure, then game goes out of your hand. And that's what is India's game. India's game is to rotate the strikes, whether you lose wicket or not. Because if you keep rotating strikes, the confidence you gather. So that's what Australians are doing now. And they are in India, not in their home country, Australia. So in India, they have to be a bit careful with their like skills or shot selection and everything. So that's what will matter. राइट. सो अब अगर हम देखें तो हाँ, मोहित जी बोल रहे हैं इंडिया की ओर से व्हाट डू यू थिंक, मतलब इंडिया के हिसाब से कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा जो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाता नजर आएगा? विल इट बी रोहित शर्मा? विल इट बी Rohit Sharma for sure. Rohit Sharma for sure. And I will also bank on Shreyas Iyer because that batter has also done quite good. Since his return from injury, he has been in great touch with great shot selection and everything. So he will exhibit his skills with the bat. And he has also looked too much confident. So it will be good to watch him. राइट. तो अब अमर, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड वी टॉक अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान किशन. Ishan Kishan, yes. हाँ, तो अभी ईशान किशन का जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक उसका ग्राफ काफी ज्यादा ऊपर नीचे आ रहा है. आप ईशान किशन को आप टॉप ऑर्डर में खिला सकते हो, आप ईशान किशन को चौथे पांचवें नंबर पे खिला सकते हो एंड आई गेस वो काफी कंफर्टेबल होके भी खेलते हैं. He is a kind of adjustable player. He can adjust anywhere. So that's why with Shubman Gill having been ruled out due to dengue, so Ishan Kishan has been brought in to open the batting with Rohit Sharma, Indian skipper Rohit Sharma. So he has been up to the standards. Ishan Kishan, he has done well, and today his
batting will be of utmost importance. He has to play and he has to deliver, because that match is very crucial for India, because this is their first match of the World Cup tournament and they need to win it to get off to a great start in their campaign of the World Cup. सो अगर हम लाइनअप पे नजर डालें तो दे हैव लाइक रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अश्विन, कुलदीप, बुमराह एंड सिराज. टीम काफी सॉर्टेड है. India's team is very strong. There's no doubt about it. Undoubtedly, they are very strong. India's batting, bowling, fielding, all-round performance, everything is up to them. आई थिंक अभी एक विकेट और, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई स्टीव स्मिथ को अगर आप Steve Smith मुकाबला अपने हाथ में करना है ना, Steve Smith का is wicket struggling against R. Ashwin. Repeatedly, he has struggled against R. Ashwin. बिकॉज यहाँ से अगर गेम को थोड़ा भी हमें अपने हाथ में लेना है ना, तो आई थिंक कि एक विकेट और गिरना चाहिए, एंड दैट शुड बी स्टीव स्मिथ. Steve Smith. Once Steve Smith departs, Australia will be under a lot of pressure because he has been keeping Australia confident. Steve Smith has delivered today, and he was set. भाई मोहित लगातार पूछ रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को क्यों नहीं चूज किया गया है. सूर्य कुमार यादव, मोहित आप भी बताइए कि अगर आप उनको चूज करना चाह रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव को आप पहले तो कौन से नंबर पे बल्लेबाजी करना चाहेंगे, आप भी हमें बताइए और आप बताइए हमारे. What do you think? See, there have been numerous opinions about Surya Kumar Yadav, but just getting him into the World Cup all of a sudden, it doesn't make sense, I think, because he was given chance in last 4, 5, 6 ODIs. Earlier, he did not perform except one ODI. In one ODI, he performed well with his half century. He is more of a T20 player than ODI player. So, keeping that in mind, he has been rested or just नंबर 4 पे बोला जा रहा है. तो आदित्य, मोहित, आप भी आपके हिसाब से नंबर 4 पे आएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं सूर्य कुमार यादव को लाने के लिए, तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, वो दोनों तो है ही टॉप पे. उसके अलावा अगर आप जाते हैं, ईशान किशन इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि अभी आपके माइंडसेट में ये है कि भाई एक तो ऋषभ पंत नहीं है. ऋषभ पंत इज मतलब वो एक बात की कहानी है, लेकिन अभी के लिए अगर चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर, अभी तक दोस्तों श्रेयस अय्यर के जो रिकॉर्ड्स आप देखेंगे पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक, उन्होंने ज्यादा रन भी बनाए, उन्हें ज्यादा मौके मिले, उन्होंने ज्यादा रन बनाए चौथे नंबर पे. तो ऐसे में यार मेरे अकॉर्डिंगली आप सूर्य कुमार यादव को और थोड़ा चांस देंगे आप डायरेक्टली, क्योंकि यार ये सेलेक्टर्स की भी गलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर आप उन्हें खिलाते नहीं हो. लास्ट मोमेंट में आप सूर्य कुमार यादव को ट्राइड एंड टेस्टिंग के लिए आप लेके आते हैं, ठीक है, एंड समटाइम्स ही परफॉर्म, समटाइम ही डजंट परफॉर्म. तो उस बेसिस पे आप वर्ल्ड कप पे लेके आना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे श्रेयस अय्यर पर भरोसा ज्यादा है. And I agree with you with that opinion that they keep giving chances to the players, ahead of the big events or behind big events. But during big events, they just don't test out the players. क्योंकि अभी अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो अभी तक हमने देखा था कि जिस तरीके से मोहम्मद सिराज इफेक्टिवली मतलब कामयाब हुए थे थ्रू आउट एशिया कप, ठीक है, जिससे मतलब नई बॉल से जो मोहम्मद सिराज पहले 10 ओवर में कमाल दिखाते हैं, ठीक है, वो इस मैच में तो हमें देखने को मिला नहीं, राइट. और वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज के ऊपर एक्सपीरियंस वाइज आई थिंक मोहम्मद शमी इज नॉट बैड. मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह का जो कॉम्बिनेशन है, and Bumrah, they are one of the most experienced bowlers of Team India. And if we talk about Surya Kumar Yadav, the problem with Surya Kumar Yadav is that Shreyas Iyer, he was out due to injury. So in meantime, Indian management, they thought to bring Surya Kumar Yadav to fill the gap of Shreyas Iyer, number 4 position. Since Shreyas Iyer is back in the team now, that is why Surya Kumar Yadav has not been. और ऊपर से आदित्य भी सही बात बोल रहे हैं, वो जो इनकी सेंचुरी आई थी श्रेयस अय्यर की लास्ट मैच में, Absolutely. वो और उनके नाम पर ठप्पा लगाया है उस सेंचुरी ने. That's what happens with everyone. If you perform in the previous game, in the next game you are confirmed. Exactly. That's what happens because अच्छा, इंजरी से पहले भी जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था जिसमें सारी टीम performed well. आउट During Asia. हाँ, ड्यूरिंग एशिया कप, वो उनका जो शॉट सिलेक्शन था वो दैट वाज गुड. पुल शॉट खेलने वाले थे बट वो बॉल आई नहीं.
वो मतलब he was looking good. He was looking fine. He has always looked good since his return from injury. But Shreyas Iyer has one weakness, and that is known to everyone, I think, in the world of cricket, that he struggles against short balls. Exactly. That's his weakness. So against short balls, he's. I think अभी 20-22 ओवर तक तो कुलदीप और अश्विन ही संभालने वाले हैं पारी को. Yeah, currently it is 19th over going on. Exactly. तो आखिरी बॉल बची है 19th ओवर की और 77 रन्स बने अभी तक. मतलब अभी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया बाकी टीम्स के खिलाफ 20वें ओवर तक आते आते वो लाइक they lose 4-5 wickets. They lose 4-5 wickets, but वो 200 के आसपास रन भी बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं मतलब 150 से 200 के बीच में टच होने लग जाए. One thing is also good from India's point of view. They will be happy because they haven't leaked as many runs as Australia would have wanted. India haven't leaked, and we have to like commend India's fielding today. It's been phenomenal. They have done a very Ishan Kishan, Shreyas Iyer, Virat Kohli, all over the ground. They have been very perfect while stopping the ball from going to boundaries and everything. So it's Exactly. great. तो अभी फिलहाल के लिए तो अभी हम देख रहे हैं तो मुकाबला अभी किसी के पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा है. 50-50 contest It's a 50-50 contest as of now. Exactly. क्योंकि करंट रन रेट जो है आपका 4.05 का चल रहा है. 19वां ओवर हो रहा है और 19 ओवर हो चुके हैं, माफ करिएगा, और 77 रन्स बने हैं अभी तक 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के. And after 25 overs, Australia will think to accelerate their innings because they need to get runs. If they don't get runs, India are very powerful in their batting as well. They can get to the score. And don't forget the trio of Australia bowlers: Josh Hazlewood, Mitchell Stark, Pat Cummins. ये अच्छा ये हाँ इन तीनों की कहानी भी अलग होगी क्योंकि वो हमें सेकंड इनिंग में देखना दिलचस्प होगा कि जो ये तीनों की तिगड़ी जो है ये किस तरीके से इंडिया के बैटर्स को परेशान करेंगे. Yes. But one thing we have to keep in mind, like it was being said that pitch will assist the spinners, but I haven't seen that. I haven't noticed that yet. But like pacers and spinners, they have got the same help. Now Javin Jadeja has been introduced into the attack by Rohit Sharma. So let's see what he can do. लगातार मोहित पूछ रहे हैं कि इंडिया का अगला कप्तान कौन होगा. Obviously काफी सारे ऐसे चेहरे होंगे जो अब ये जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है. Absolutely. Even I'm including विराट कोहली, रोहित शर्मा is there. है ना. रोहित शर्मा तो obviously है. उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप ही होने वाला है. कोहली too. और विराट कोहली हो गए. And I guess टीम इंडिया से मोहम्मद शमी will be. मोहम्मद शमी, it can for it because yes, but they will keep playing test. They will keep playing test. But अभी के लिए अगर आप जैसा कि ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है मोहित द्वारा कि भाई अगला कप्तान कौन होगा. There are किसके ऑप्शंस आपको लगते हैं? In my mind, there are 3 guys. KL Rahul is there, Shreyas Iyer is there, and Shubman Gill is there. These 3 guys. ये आप एक किस तरीके से देख रहे हो? KL राहुल, शुभमन गिल है, Shreyas Iyer. श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर को मुझे लगता है कि यार उसको कप्तानी देनी चाहिए, बट श्रेयस अय्यर से पहले KL राहुल इज अ बेटर ऑप्शन. That's what I said. KL Rahul is also. लेकिन अगर एक्सपीरियंस के लिहाज से अगर आप देखोगे ना तो एक्सपीरियंस में तो आपको यहाँ पर जसप्रीत बुमराह मिलते हैं. जसप्रीत बुमराह is there, but बिकॉज आप मैं हार्दिक पांड्या को चूज करता, लेकिन हार्दिक पांड्या को मैं इसलिए चूज नहीं करूंगा क्योंकि वो ओडीआई में आई डोंट नो, he is a kind of T20I. हाँ, वो T20 के लिए उनका कप्तानी चलेगी, बट ओडीआई के लिए मुझे लगता नहीं है कि हार्दिक पर मतलब भरोसा. पर्सनली स्पीकिंग उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारी आएगी ना उतना ही वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर फिर सवाल उठेंगे जो उनकी अभी तक. It happens with every player. It happens and with personally everyone. speaking, Shreyas Iyer is the staunch option for leading the team. श्रेयस अय्यर का मुझे लगता है श्रेयस अय्यर कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंडियन कैंप. One thing I don't like about that, I don't know, this is natural, but he is too much prone to injuries, frequent injuries. He has been the victim of frequent. He missed the IPL, he missed the Asia Cup. Like he played one match, then again he suffered some injury. He was out. Now he's back in the ODI World Cup. God forbid. बट अगर आपको ये नहीं लगता यार कि एक बंदा जो आईपीएल के टाइम से बाहर चल रहा है, ठीक है, आईपीएल आपने नहीं खेला, आपने कुछ बायलैटरल सीरीज मिस करी, आपने एशिया कप भी ऑलमोस्ट मिस किया. एशिया कप में आई डोंट थिंक कि श्रेयस अय्यर ने ज्यादा मैचेस खेले, राइट. वो लास्ट में एक सेंचुरी आ गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बायलैटरल सीरीज हुई, तो उनको इंक्लूड किया गया. प्लेयर, आई एम नॉट जस्ट कोटिंग श्रेयस अय्यर, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर प्लेयर्स एज वेल, जिन जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो थ्रू आउट द ईयर मतलब
एक्शन नहीं करते हैं, एक्शन में नहीं रहते हैं, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको पर्क मिलता है जस्ट बिकॉज दे उनका अपना नाम है, तो उन्हें वापस एक बड़े इवेंट में, एक आईसीसी इवेंट में उन्हें वापस शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो नए प्लेयर हैं, जो इंजरी प्रोन नहीं है जैसा कि आपने कहा, तो उनको चांस देना क्या सही नहीं है? कि मतलब उनको भी तो आप ट्राई कर सकते हो। अब रोहित शर्मा ने ये बोला है कि आई विल बी अपीयरिंग इन दी T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर जो होगा, लेकिन जब मुकाबले बायलैटरल सीरीज के होते हैं तब आप रोहित शर्मा को नहीं देखते हो, उनको रेस्ट दिया जाता है। बट जब वर्ल्ड कप होगा तब आप रोहित को ले आओगे, तो उस टाइम पे टॉप ऑर्डर में जो चेंजेस होते हैं, ये तो टीम इंडिया की हमेशा से परेशानी रही है ना। This is fine, and former cricketers also, they have also raised questions about this. That when there is bilateral series, you rest senior players like Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul sometimes as well. So you rest these players. So they have said that if you are resting these players, so you should bring in some new faces in the team. You should give them opportunities just to test out their skills and how they are performing and everything. But it hasn't happened so far. So because that is something that Indian management need to take the call on. This is the thing. यस, इवन आई थिंक सो कि यहाँ पर अच्छा अभी 21वां ओवर चल रहा है, और देखो जैसा कि मैं बोल रहा था ना आपको, कुछ भी हो, विकेट गिरे, चाहे कितना भी प्रेशर डालने की कोशिश करी जाए, ऑस्ट्रेलिया का जो पिछले कुछ समय से साउथ अफ्रीका की सीरीज जो थी वो बेहद खराब रही थी ऑस्ट्रेलिया की, एंड जस्ट अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप आप एक बायलैटरल सीरीज इतने बुरे तरीके से आप हार के आ रहे हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आई मीन साउथ अफ्रीका इज नॉट अ बैड टीम, बट आप it was not about the bad team as well. Actually, senior players, they were not with the Australia team in South Africa. Mitchell Marsh was leading the team, and all senior players like Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazlewood, they all were not rested. Actually, they were going through injuries, so that is why Mitchell Marsh was leading the team. And Grant Maxwell, he was there for the first match. He didn't even play the ODIs. He played the T20Is, and during the net session, he suffered thumb injury, so he flew back to Australia. So Australia missed the service of some staunch players, top quality players. That is why they lost that series, and but they won the two matches, I think. First two matches of the series, and last three matches, it was 5 match ODI series. So 3 matches, South Africa won. But in India, they performed well. तो यहाँ पर अमर, अभी आपको क्या लगता है कि अगले जो 10 ओवर आने वाले हैं, यानी कि, और दोस्तों आप भी बताइएगा कि अगले 10 ओवर जो आने वाले हैं, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कहां पर देखते हैं? See, this is 21st over going on, and what I believe in is that if you don't lose wickets, whether you have low score, if you have wickets in your hand, you are in a commanding position. 30 ओवर तक क्या स्कोर 140 पे जाता नजर आ रहा है? It can go. आप भी बताइए दोस्तों कि 30 ओवर तक क्या स्कोर 140 या फिर मैं कहूं 150, अगर यहां से पारी को थोड़ा और एक्सेलरेट करते हैं दोनों बल्लेबाज, कोई भी एक दो बल्लेबाज अगर टिक जाता है, तो क्या यहां पर स्कोर 150 के आसपास जा सकता है? It will 120 past. It will be. And what about the highest run scorer from Australia? Australia, Smith is doing that. So you think Smith will lead the charge today? I'm totally agreeing with that. The fact that Smith, he has been careful and he has just smashing the ball all over the ground. And currently we have got Marnus Labuschagne. And Rohit Sharma is looking a little bit nervous. रोहित शर्मा नहीं, अच्छा ये चीज एक प्लस पॉइंट भी है रोहित का, एंड आई थिंक ये चीज उनके ऊपर शायद कभी कभी हावी भी पड़ जाती है कि विकेट गिरने के बाद भी ना रोहित का एक एक्सप्रेशन है ना, वो एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन है। That has to happen. मतलब sometimes like विराट कोहली is too aggressive, मतलब when he gets wicket, you know his body language change, and तो वो चीज हम रोहित शर्मा में नहीं देखते। No, he's like okay यार ठीक है, it's a big wicket, he like celebrates for a second or two and then he gets back into the game. These are personality traits actually. So Rohit Sharma has different personality. He likes to keep calm and just focus on the. But on the other hand, Virat Kohli is a kind of aggressive guy. He wants to celebrate and show the opposition that we are there. So that's what is with Virat Kohli. But both are very talented players and senior players in the Indian contingent. So
अभी तक अगर हम इंडियन बॉलिंग अटैक पर नजर डालें तो 6 बॉलर हम लोगों ने यूज कर लिए हैं, राइट? All of the bowlers we have used. we have consumed everyone and we have like tried everyone. और यहाँ पर हमें 2 सफलता मिली, एक जसप्रीत बुमराह द्वारा और एक मिली है हमें कुलदीप यादव द्वारा। एंड आई गेस रविंद्र जडेजा यार, ये जडेजा का ही जड्डू का स्पेल चल रहा है, 22nd ओवर है और इसी 89 रन बच चुके हैं, राइट? और ये उनका दूसरा ओवर है, ऑलरेडी 9 रन दे चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक, मतलब यहाँ पे ये जो साल है ना, जडेजा का जो स्पार्क रहता था वो मुझे इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। We haven't seen that yet. I guess he's like it's a question mark actually. He's lost the track or something like that. No, yeah, he has lost the touch actually. And one more thing is I am noticing today with Steve Smith, he is very careful. He struggled against Ashwin, but since the beginning of the inning, he has been really careful, and that's what has helped him dominate the tossy days, which is what he is doing now. मोहित, अभी आपने ये आप जो चेन्नई की बात कर रहे हो, अभी हम लोगों ने एशियन गेम्स की बात करी थी एंड लाइक अमर ने बोला कि ऋतुराज गायकवाड ने अच्छा लीड किया। मतलब ऑब्वियसली इंडिया की टीम जो थी वो बाकी सारी टीम से बेहतर थी इस बारे में कोई तो उस मामले में कोई मतलब दो राय नहीं है। बट स्टिल अगर आप सीएसके की बात कर रहे हो ना, यहाँ से थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, वर्ल्ड कप से आईपीएल पे जा रहे हैं। सीएसके की टीम आई थिंक, देखो आपने जडेजा को ट्राई किया तो एक वो जो होती है ना कि मतलब फैंस का जो एक जजमेंट होता है वो ज्यादा हावी पड़ गया कि भाई जडेजा के जो पहले कुछ मैचेस सही नहीं गए, जिसकी वजह से चेन्नई काफी पीछे चली गई थी एंड देन धोनी केम इनटू पिक्चर एंड देन ही लेड द टीम समटाइम्स। अभी आई थिंक कैन ऋतुराज गायकवाड can be considered for this role and he could be the front runner exactly for this role as well. ऋतुराज गायकवाड को अगर आई गेस धोनी का भी नेक्स्ट आईपीएल और रहेगा, it will be, और अगर वो रहता है तो डेफिनेटली ही विल कैप्टन द टीम and every fan would want to see MS Dhoni exactly lead the Chennai Super Kings again. लेकिन जब धोनी नहीं रहेंगे तो आई थिंक मोहित की यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड इज द नेक्स्ट new face and front runner he will be, because Moeen Ali, he is an overseas player and I don't think that he will like under the like guidance of MS Dhoni, Ruturaj can obviously he can excel much better. और मेरे हिसाब से वो जो उनका जो नजरिया होगा ना गेम देखने का धोनी के साथ सीएसके में रहने के बाद, आई थिंक वो इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में और ज्यादा हेल्प आउट करेगा। all T20 leagues always help you in your international career obviously। अच्छा, यही चीज हम अभी यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, जो डेविड वार्नर का अभी कुछ टाइम पे ग्राफ नीचे गया था, राइट? है ना, वी थॉट कि यहाँ पर डेविड वार्नर शायद, ऑब्वियसली उनका भी, वार्नर का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप है, स्टीव स्मिथ का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, ठीक है, बट जिस तरीके की बल्लेबाजी ये लोग अब इंडिया में करने लग गए हैं, द काइंड ऑफ लाइक दे हैंडल स्पिन अटैक, तो वो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं आईपीएल के आने के बाद से जरूर होगा। एंड लास्ट इवनिंग व्हेन Australian skipper Pat Cummins was addressing the press conference, so he was asked the same question. So he said that they are not worried, but they are little bit worried about India's spin bowling attack. But at the same time, Pat Cummins also emphasized on the fact that Australian players have played the IPL, so they will use that experience in that match. So it is helping them, obviously, and they have played more matches, I think, at this venue. Yeah, obviously, yeah, more matches than other venues. चेन्नई का ग्राउंड ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे बेस्ट रहा है आईपीएल के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। अगर हम देखें तो फिलहाल दोस्तों मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। पहली बॉल तो उन्होंने बहुत अच्छी करी थी, स्टीव स्मिथ का अच्छा डिफेंस था, लेकिन यहाँ पर सिराज अब अपना एक ब्रेक थ्रू लाने की कोशिश जरूर करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि अपना भी खाता खोलें यहाँ पर, क्योंकि उनके जो पहले 3 ओवर गए थे उन्होंने मात्र 9 रन दिए थे एंड 1 ओवर वाज मेडेड। डू यू थिंक दैट some sort of vacuum like absence of Mohammad Shami is being felt? I think so यार, क्योंकि जो ये 30 ओवर तक का जो समय होता है ना, yes. वो जो ये जो मिड ओवर्स हैं, यहाँ पे मिडिल ओवर्स में आई थिंक मोहम्मद शमी की एक्सपीरियंस जो है ना, मोहम्मद शमी भले ही पहले 10 ओवर में विकेट ले ना ले, ठीक है, बट जो मिडिल ओवर्स में जो कहीं ना कहीं जो अपना कारनामा करके दिखाते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर द इंडियन क्रिकेट। एंड आई थिंक in the last game against Australia, last ODI, Mohammad Shami didn't hit 5 for. Yes, 5 against Australia. 5 wickets. Yes.
I was thinking that he would make the cut, but that did not happen. So करंटली अगर आप देखेंगे तो आई थिंक कि अगर इंडिया के बॉलिंग अटैक की बात हो रही है, पहला इनिंग में अभी हमें समझ में आ जाएगा कि पिच किस तरफ जा रही है, यू नो, whether it is like favoring the bat spinners or it is favoring it's the spinners. favoring neither actually. Obviously, तो अब ये चीज डिपेंड करेगी कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो हमारे त्रिदेव है, सो कॉल्ड तिगड़ी जो है, And Adam Zampa is spinner. even Adam And Zampa, Glenn Maxwell can also bowl. Maxwell, what he did in the bilateral Absolutely. series against India. Bilateral series. That's what I felt. It just hit my mind. Adam Zampa, okay, they've got Glenn Maxwell. These are the two spinners Yes, they are using. Okay, And they have four seamers in the form of Hazelwood, Stark, Hazelwood, Cummins, Stark, and Green, Cameron. Green. Then I guess Marsh can also ball, yeah. Marsh can is also a bowl. all-rounder, obviously. Yes, he is But also- मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्श को जो इतनी जल्दी प्रमोट किया गया ना, मार्श used to come at around like Marsh fifth or is a sixth kind of position, but attacking now player. He's now मतलब like promoted to Opening. हाँ. Opening. Marsh is a kind of attacking player, and we also saw that during South Africa series and India series as well. He has been in the rhythm, but today it was not his day, so he departed early. But he would look to get back to act like into the form after some like in the next match. So that's what would happen. But currently, if we see the scenario, Australia are looking good. Yeah. 93-2, but their score is low. Score is very इंडिया के साथ ये चीज हमेशा रहती है कि आप दूसरी किसी भी ट्रैक पे, आप दुनिया के किसी भी मैदान पे चले जाइए, ठीक है, टीम इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगी, लेकिन इंडिया की जो पिचेस हैं उस पे दूसरी टीम्स डेफिनेटली सफर करती नजर आती है. No, Australia's skipper, score is very low. विकेट भले ही नहीं गिर रहे यार, विकेट आप देखोगे ना तो लास्ट अगर आप विकेट आपका कौन सा गिरा है लास्ट? डेविड वार्नर, राइट? And it's been, I think, maybe 4-5 overs since that. Or 70 नहीं 74 रन्स पे आपका दूसरा विकेट गिरा था 17th ओवर में, and it's 93 only. हाँ, and it's 93 only. और आप ऑलमोस्ट 6 ओवर खेल चुके हो एंड आपके रन ही कितने बने? तो इंडिया भले हम विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन रन भी नहीं बनने दे रहे हैं. बट यहाँ पर यार ये चीज ना एक पॉइंट पे बल्लेबाज को भी कंफर्टेबल कर देती है. आप काफी लंबे अरसे तक भले ही आप रन ना बना पाओ, लेकिन अगर आप क्रीज पे मौजूद हो ना तो That's what I said. वो चीज आप एंड पे आपके लिए, If you have wickets in your hand, you are confident. क्योंकि फिर जो आखिरी के वो जो 30 से 50 ओवर का जो 20 ओवर का जो गेम होता है You ना, can get even that is 100 runs in those overs. that is 2020. Yes, and they have Glenn Maxwell sitting कि there. अभी 30 ओवर तक तो पता है बंदा ये सोचता है कि यार 30 ओवर तक मुझे पहले हमें 20 ओवर खेलने, हमें 100 से 120 रन के आसपास हम टारगेट करते हैं, एंड देन जो 20 से 30 ओवर जो होते हैं ये तो 10 ओवर होते हैं, ये समझने के ओवर है कि हम लेट्स टेक सम टाइम एंड आराम से रन बनाएंगे. After 30 overs, Australia will need to take chances. They will need to take chances in order to amplify their score, because currently they are having very low score. If we see the overs, 24th over is going on and they are 95. देखो अगर आप देखोगे ना तो even Mitchell Stark can bat, like he can score somewhere around 13-14 runs in 6-7 balls, except Josh Hazelwood. Everyone can bat in Australia. Adam Zampa can also bat. Okay, so he can just he can get 10 to 15 runs. He can support you. He can be a handy batter. But right now अगर आप देखो तो they've got Cameron Green, Alex Carey, Glenn Maxwell, Pat Cummins को भी मैं बल्लेबाजी में लेके जाऊंगा because he can score 30-40 runs which are crucial for their team. Pat Cummins and Mitchell Stark, he can hammer big sixes. तो अभी they have like 4-5 batters and जो कि अभी टीम का स्कोर लेके जा सकते हैं. Too many batters are there to come. दोस्तों आप बताना कि what do you think, अगर ये स्कोर आपको कहां जाता नजर आ रहा है, 50 ओवर तक कहां पे जा रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पर स्कोर 350 के आसपास गया, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर 300 से 350 के पास गया तो टीम इंडिया के लिए भी परेशानी हो सकती है. If the score, like I said, even I was thinking that before our discussion, that if Australia cruise past 350, India will be in a very big trouble. Obviously यार, क्योंकि यहाँ पर मुझे because today there is no Shubman Gill.
Shubman Gill is a kind of player who dominates and gives hard times to Australians. Shubman Gill is not there, so Australia will be a little bit cheerful as well. Because Shubman Gill is a kind of player who likes to play grounded shots and takes on the bowlers. बिकॉज रोहित एंड ईशान किशन इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी They ज्यादा haven't done too much. हाँ Only for Mumbai Indians they have done that. They have done that for Mumbai Indians, and now they are here. यार 24 ओवर हो चुके हैं, अभी तक 24 ओवर हो चुके हैं और 100 रन भी नहीं बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। Yes. आप एक तरफ देख रहे हो कि भाई किस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है, बॉलर्स रन नहीं बनने दे रहे हैं, लेकिन यार विकेट नहीं गिर रहा है। एंड वो एक जो चीज है ना, वो गेंदबाजों को कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करती है। I pointed out that India haven't leaked run, Australia haven't lost wicket. So it is a 50-50 contest. That is the thing. But अभी भी मुझे I am emphasizing that after 30 overs, Australia will start taking their chances. ऑब्वियसली यार They will- 24 गेंदें मार्नस लाबुशिन खेल They चुके will हैं, try 14 रन to- बने हैं yes, उनके। स्टीव स्मिथ स्ट्रगलिंग भाई, 62 गेंदों में 42 रन हुए। अब वो मुझे लग रहा है कि ओडीआई से टेस्ट फॉर्मेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं स्टीव स्मिथ। जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे थे ना शुरुआत में, Earlier he was the way he was hitting, वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है। और is he like No. these guys are What has waiting for happened the with best? Smith? He was confident with David Warner. After David Warner's wicket, Australia are a bit careful because they don't want to lose any more wickets. Because if they lose one more wicket, then they can keep losing wickets one after another. Because India's strategy is also the same. They are India- struggling for boundaries. They are That's what struggling is for boundaries. And what I have noticed that is ball is able to find Ishan Kishan wherever he is in the ground. Ball is able to find Ishan Kishan. That's what has happened. But he has fielded well today. Ishan Exactly. Kishan. हाँ. Whether he struggles during wicket keeping, but he has fielded well today. It's a very commendable job from. आज कुलदीप यादव को भी काफी राहत होगी कि भाई मुझ पे भरोसा किया है और मैंने No, he did his job. Hmm. He did his job. Although it's not a complete job, but he provided a much needed breakthrough to India. तो लेट्स सी कि अभी यहाँ से गेम कहाँ जाता है। एक बार फिर मोहम्मद सिराज को गेंद मिल चुकी है, 101 रन बन चुके हैं 25वें ओवर की तीसरी गेंद। और स्टीव स्मिथ एक बार ये कुछ He was trying to play scoop shot. he was trying to play some scoop shot, वो कुछ कलात्मक शॉट खेलने जा रहे थे लेकिन Could not execute that couldn't actually. execute as well. So let's just wait for. I just want to see 1 or 2 wicket, or Yes. either they should start bombarding. भाई या तो मारो, ठीक है, या फिर No, यहाँ पर they एक- will also have some strategy in their mind because this is the first game for both teams. So they Okay, so finally let's see where the game goes. दोस्तों अभी के लिए इस लाइव सेशन को यहीं पे थोड़ा रोकते हैं and we'll meet you around after the proceedings. okay First innings. फर्स्ट इनिंग्स। और वेट करते हैं दोस्तों लास्ट के आपके साथ हम जो 10 ओवर होंगे, हम आपके साथ 5-10 ओवर बरकरार रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। और यहाँ पर आप बताइएगा जरूर दोस्तों कि आपके लिहाज से ये स्कोर कहां तक जाता नजर आ रहा है। वी आर ड्रॉपिंग द माइक्स। 25वें ओवर पे यहाँ पर मुकाबला 101 रन पे पहुंचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, राइट अमर? They और are struggling. यहाँ पर 1-2 विकेट और मिल जाए तो बात बन जाएगी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए भी ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। Australia, from my point of view, they are 50 runs behind. ऑब्वियसली हाँ, 50 runs they are. ऑस्ट्रेलिया अभी 50 आई वुड से 50 to 60 रन्स They ये are अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। No, they are 50 ठीक है। runs behind because this is 25th over. They should have been at 150. अब- They are only 100. यहाँ से गेम भी बदल सकता है। यहाँ से अगर From कोई here on, कोई it can पागल go. हो गया ना, कोई It can किसी go. के दिमाग में चढ़ गया और कोई अभी मारना पीटना शुरू कर दिया किसी ने, तो यहाँ पे स्कोर पता नहीं कब से कहाँ से कहाँ It पहुंच can go जाएगा, anywhere. राइट? तो वी विल बी राइट बैक विद यू, सो स्टे ट्यून्ड विद अस दोस्तों। आज कौन जीतेगा? अवनीश पूछ रहे हैं आज कौन जीतेगा। अवनीश जी, फिलहाल तो मुझे लग रहा है ना, अमर के कहने का मतलब है कि 50-50 का मतलब 50-50 चांसेस है। मेरे हिसाब से जिस तरीके की बल्लेबाजी अभी चल रही है और जिस तरीके की पकड़ इंडियन बॉलर्स ने अपने हाथों में ले रखी है, भाई इंडिया के जीतने के चांसेस हैं। तो Again, Ishan Kishan, he was on the field. इसी के साथ दोस्तों 25 ओवर हो चुके हैं पूरे। 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं 102 रन। और इसी के साथ हम यहाँ पर अपना लाइव सेशन थोड़ी देर के लिए
इस पर पूर्ण विराम लगा रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, फटाफट से सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु को, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।